Hi. So this is day 5, and I'd like to write option for the intraday naked option, and based on the price behavior with the double GAN analysis. तो रिसेंटली जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है निफ्टी ने, दैट इज बेस्ड ऑन द 17,577. तो दिस इज द GAN number, by the way. Now, if you want, you can buy the put, but I'd like to sell a call. So 17,500 call, I would like to sell over here. With the 5 minute of the time frame and with the stop loss of 140. Now, let me just, this is sell, and since 17,500 call, I sold that 129. So I'd like to place a stop loss of around 139 onwards. Limit price 139. Okay. Check, is it placed or not? Bang. No, okay, now it placed. Now I place this order. Now what about the if the market gone on the upward side? So in that case, I would like to buy a call order at the limit price. So that means 1700, 500 call, 17,500 call at a price of 17,500 call. I would like to buy, sorry, at the same price in the MIS order. I would like to buy it at a price of around 136. Buy limit price 136. The intraday. All right. Yeah, but it's not executed. It is executed actually. Aye. That's okay.
or whatever, if it executed also, I can make some good thing over here. That will be, let me put up basic stop loss here. $128 doesn't stop loss. I just exit it until get to it. No, put the stop loss at here. So this is actually a very safe way to do that trade. कि कोई भी डायरेक्शन पे हमारा अगर मूवमेंट आते हैं तो ट्रेड मिस नहीं होगा. और दूसरी तरीके से अगर हम देखें कि दैट इज ज़ीरो बिग रिस्क. ओके, दैट इज ज़ीरो बिग रिस्क. So pausing the video right here and I will get back. हाय. सो जो हमने डिस्कस किए थे आपसे, तो उस तरीके से ही ट्रेड हो गए. एंड द कॉल साइड स्टॉप्ड आउट. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कॉल साइड सेलिंग पे हमारे प्रॉफिट हो रहा है. तो बेसिकली मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से हाउ वी कैन प्लेस द एस एल ऑर्डर ओवर हियर, क्योंकि यूजुअली एस एल ऑर्डर तो होते हैं बट यहाँ पर मिले नहीं मुझे. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डब्ल्यू गैन के जो 577 के लेवल के जरिए हमने ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल रहा हमारे लिए. एंड नाउ अगर आप देखें तो वन लॉट पे वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 350 रुपीज़ ओवर हियर. मोस्टली दिस इज गुड थिंग. तो इस तरीके से आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क पे हमेशा ही ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं. बट या दो साइड पर बाइंग पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सेलिंग ही करना है. सो बाइंग का एग्जांपल मैं कभी और दिखाऊंगा. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को स्मॉल रखते हैं.
So that's the thing. I just wanted to share it with you. Okay. Now over here I would like to trail the stop loss now. क्योंकि अगर स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर देते हैं यहाँ पर, इन दैट केस 367 तो गिर रहा है मार्केट ओवरऑल, अच्छी तरीके से ही गिर रहा है. सो ट्रेल कहाँ पर करें, जहाँ पर एक काम करते हैं, ट्रेल नहीं करते, इसको हम बुक कर लेते हैं प्रॉफिट को, बिकॉज I'd like to close this session. ठीक है. I think this is booked now. हाँ चल बुक हो गया. तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन था आपके लिए, किस तरीके से हम लोग ये ऑर्डर को इनिशिएट कर सकते हैं. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया हमने. तो फर्स्ट हमें एक WT गैन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, या फिर आप किसी तरीके से भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम स्ट्राइक प्राइस लेना है, एक पे सेलिंग करने हैं हमें, दूसरे पे हमें बाइंग करने हैं, वो ही सेम मार्केट ऑर्डर पे. एक पे स्टॉप लॉस डालना है, दूसरे पे भी स्टॉप लॉस डालना है. वन काइंड ऑफ वन साइडेड स्टॉप लॉस आपकी हिट होगा, दूसरे साइड पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है. दोनों साइड पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस मोर देन लेस देन 20% ही होगा. अगर होते भी है देन यू कैन ऑल्सो टेक द रिवेंज एंट्री और द बेटर इट टू कॉल बिट एज अ रिवर्स एंट्री. तो उसी पॉइंट से आप कर सकते हैं. इस तरीके से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप कई बार एंट्री कर सकते हो. वन एंड वन टाइम आपको प्रॉफिट हो जाएगा. बट अंडरस्टूड वन थिंग, अगर वॉलेटिलिटी आपको लोअर दिखे तो आपको बाइंग पे जाना है, वॉलेटिलिटी आपको हायर दिखे तो आपको बाइंग और सेल दोनों पे जाना है. और किस तरीके से वॉलेटिलिटी को फाइंड आउट करना है इन द टाइम ऑफ ऑप्शन, I will let you know in the next video. Tomorrow I will keep the theoretical video over here, and that will be fine. Okay. So bye for now. I will get